हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। ये वीडियो जो है ये +3 फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ हम कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस those I have selected for the forthcoming university exam. I will give you some selected questions and possible such questions that may be asked in the exam. So let us start. So हमारा पहला यूनिट है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स ये जो यूनिट में यहाँ तो कई सारे लंग क्वेश्चंस हैं। पहले मैं लंग क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो लॉन्ग क्वेश्चंस which are most important are related to moment of inertia of bodies of different shapes, mainly in the syllabus cylindrical bodies and spherical bodies are there. So you should prepare mostly on moment of inertia of cylindrical body and moment of inertia of spherical solid sphere and spherical cell. एक दो तीन सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए सिलेंडर का जो एक्सिस होता है, about that axis it will be a short question, but you have to prepare for the moment of inertia about an axis which is perpendicular and passing through the center of the cylinder and perpendicular to the axis of symmetry of the cylinder. That thing you should prepare. And for moment of inertia of solid sphere, it is about the axis which is the diameter of the solid sphere. That means moment of inertia about the diameter of the solid sphere. And for the spherical cell also it is about the diameter of the spherical cell. You should prepare these as the long questions, and as short questions I have taken Coriolis force and its applications और एक मैं चूज किया हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. You have to write the principle as well as the proof of it. So I have selected this one, and parallel and perpendicular axis theorems. These things I have taken. I am telling again, parallel and perpendicular axis theorems
Coriolis force and its applications, and third one, principle of conservation of angular. This much from rotational dynamics, and that from then from second unit is about elasticity and fluid motion. These two chapters are there in second unit. पहले फ्लूइड मोशन के बारे में बोलता हूं. यहां ओनली इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज Poiseuille's equations. Poiseuille's equation for flow of liquid through a capillary tube. It is very much important. It is often repeated also. So Poiseuille's equation along with correction, you should prepare it along with correction. So it is the only important long question in fluid motion, and for short question I recommend gravity waves and ripple waves. Gravity waves and ripples. This I have chosen as the most important short question. Now come to elasticity. In elasticity there are many long questions, but I have taken relations among elastic constants, then twisting torque, calculation of twisting torque on a cylinder or wire. Cylinder or wire is also a cylinder. Or third one, that is single cantilever, calculation of deflection or depression also बोलते हैं. So calculation of depression for a single cantilever. There is a double cantilever also, but most important is single cantilever. और यहाँ जो third question, important third question I want to say is flexural rigidity. और एक है important theoretical and practical values of Poisson's ratio. What is the range of values possible for Poisson's ratio? So this much from elasticity and fluid motion. Then let us move to unit 3. Unit 3. ये इसमें भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, बट आई रेकमेंड gravitational potential and field for sphere and spherical cell.
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड फॉर स्फीयर एंड स्फेरिकल सेल। इसका सरफेस में, आउटसाइड में और इनसाइड में, इसका भी आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस फॉर बोथ। And second important is Kepler's laws and their derivation. These two are important long questions that can be asked from unit 3rd or short questions. Weightlessness and its effects किसके ऊपर? एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर। इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन एस्ट्रोनॉट्स, ये एक पॉसिबल है। और जीपीएस जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज फ्रॉम यूनिट 3 and from unit 4, which is a very vast unit. It is a very large unit. It is too difficult to choose some long questions from this unit. Still, we have to undertake a lottery you can say it is on the basis of lottery or whatever it may be, but anyway यूनिट 4 में दो चैप्टर्स हैं। एक है ऑसिलेशन, में से एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक फोर्स्ड ऑसिलेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या करना है? हमको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करना है। तुमको क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड हेंस डिस्कस द केसेस ऑफ ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड केस ऑफ ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी आएगा तो एक ही केस आएगा, और ऑसिलेटरी नहीं आएगा तो दो केसेस आएगा, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्पिंग। जनरली ऑसिलेटरी उसके साथ मिल जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में ओवर डैम्पिंग, मतलब जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी और डैम्पिंग की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो दोनों फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशंस है, सपोज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। ये तीनों केसेस के लिए तीन ठो केसेस आएंगे, दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड ऑसिलेटरी केस। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन में you have to develop the differential equation for forced oscillation and you have to find out the solution. It is not very long as damped oscillation. So, but both are important. And short question में यहाँ short question, important short question है, energy of simple harmonic motion, एक इंपॉर्टेंट है, और एक है रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। जबकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो फोर्स्ड वाइब्रेशन के वजह से जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो दोनों जब सेम हो जाते हैं उसको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। सो ये रेजोनेंस और एनर्जी ऑफ एसएचएम, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने चूज किया हूँ।
एज पॉसिबल सर्ट क्वेश्चंस। तो ये है ऑसिलेशन से, और ये यूनिट 4 में और एक चैप्टर है दैट इज जनरली मॉडर्न फिजिक्स में आता है, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ से भी मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस लिया हूँ। एक है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो कि हमारा ईथर का एग्जिस्टेंस के बारे में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके वो एक्सपेरिमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन वो साथ में आता है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और एक है इक्वेशंस फॉर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। Lorentz transformation equations. Lorentz transformation equations. इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और ये Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऊपर बेस होके लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डिलेशन आता है। वो जो उसका कंसिक्वेंसेस है मैं सर्ट क्वेश्चन में लिया हूँ, वो लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डिलेशन, ये दोनों पॉसिबल सर्ट क्वेश्चंस है। और एक पॉसिबल सर्ट क्वेश्चन मैंने लिया एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज और एक रिलेटिविस्टिक डपलर इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक डपलर इफेक्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यू कैन गो थ्रू इट or you can skip it, but if you will skip this, then you have to prepare some more short questions like mass energy relation का derivation E is equal to mc square, और variation of mass with velocity, variation of mass with velocity जो कि हमारा m इज इक्वल टू m0 बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, इसका डेरिवेशन। और मास एनर्जी रिलेशन जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैंने ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस के हिसाब से लिया हूँ। और तो ये तुम्हारा जो मैकेनिक्स पेपर है, दोनों पेपर में से एक है मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स पेपर से जो 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स में से ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन चूज किया हूँ। So you can go through it. All the best. Bye.